Let's understand this mechanism of action through the another example, that is the insulin. See, it's also receptors, they are present on the surface of cells. So means there is nothing now. Again, insulin also doesn't go inside the its internal part of the cell. Receptor is they are heterotetrameric protein. ये question important है, right, for us, that जो receptors हैं, they are having two kinds of units, 2 alpha and 2 beta. So total 4 हैं. So that protein is known as heterotetrameric protein. This is on our front side. So this is the membrane, as you can see, the black one. This is the membrane, right? And this membrane, that there is present there is the alpha units. As you can see, this red color, that is the alpha unit. These are alpha units. Now then there is our inner side. On the inner side of the membrane, there is the present beta unit, right? So this thing is, these are our alpha units. With this green and red I have made, and on the inner side there is the beta unit. So it has 2 alpha and 2 beta units, but the receptors, as you can see, they are present on the inner surface only. Now this is the membrane, right? And the insulin is released. As you can see, this insulin is released. This insulin bind to its alpha units. This is a complete alpha unit. So this it binds to the alpha unit, and now insulin is what? It is first messenger. It is the first messenger. So it binds here on the alpha unit. Now inner side क्या present है? What is this? This is the beta unit, right? This is the beta unit. So there will be the conformational change in beta unit, and this beta unit, it acts as a tyrosine kinase enzyme. With the tyrosine kinase enzyme, there is activation of G protein. There is one activation of protein which is known as G protein. It activate, or it change the inactive phosphodiesterase into active protein, and this phosphodiesterase convert phosphatidyl inositol into inositol triphosphate plus diacyl glycerol, and these two, then there is the lot of cascade effect and lot of reaction, and finally insulin is produced very effectively. So alpha unit is the major site for insulin binding. Now again, listen to me very, very carefully. We are talking about insulin as the example. It is another example for membrane bound receptors, which you can mention in your exams if you are clear with the things. Now क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स हैं, तो रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? सरफेस ऑफ द सेल्स पे और द टारगेट ऑर्गन. बट इसके जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर्स क्या हैं? दे आर स्पेसिफिक प्रोटीन्स ओनली ना, दे आर स्पेसिफिक प्रोटीन्स. सो इसके जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स हैं, दे आर हैविंग 2 यूनिट्स, 2 अल्फा and 2 beta, 4 units, 2 alpha and 2 beta. So they are heterotetrameric. So this whole unit is known as alpha unit, right? ये जो मैंने ये बनाई है, that is the whole unit is alpha unit. Is it clear? This is present on the outer membrane. On the inner side of this, there is present beta unit.
राइट अब सबसे पहले फर्स्ट मैसेंजर रिलीज हुआ, कौन सा था हमारा फर्स्ट मैसेंजर? दैट इज इंसुलिन. सो इंसुलिन इज रिलीज. सो ये हमारा इंसुलिन आके अटैच हो गया अल्फा यूनिट पे, क्योंकि इंसुलिन की बाइंडिंग होती है अल्फा यूनिट पे ही. उसके इनसाइड में देयर इज द बीटा यूनिट, और बीटा यूनिट एक्ट करता है एज अ टायरोसिन काइनेज एंजाइम. जैसे ही देयर इज द कॉन्फॉर्मेशनल चेंज, इसकी शेप में चेंज हुआ, देयर इज द एक्टिवेशन ऑफ जी प्रोटीन. दिस जी प्रोटीन change the inactive phosphodiesterase into the एक्टिव फॉर्म. और इस फॉस्फोडाइएस्टरेज के एक्टिव होते ही दिस is the conversion of phosphatidyl inositol into IP3 plus DG. The purpose to tell you all this because NEET में जो question आता है, what is the second messenger which is play important role in the insulin action? So what are the your second messenger? That is IP3 plus DG. IP3 3 है triphosphate and I for inositol and DG is for diacyl glycerol. They produce lot of effects now, lot of reactions which is known as cascade effect, set of reactions, and finally with these set of reactions insulin is fastly released out, which maintain the blood sugar level, right? So there are these two examples we discussed. One you can mention in the exam, that is the adrenaline, very confidently, and second is insulin. Both have receptors which are membrane bound. Then one more example which is given in our syllabus, that is mechanism of action of steroid hormone. Now these hormones, their receptors, they are present in nucleus, and these kind of receptors, they are known as intracellular receptors because they are present inside the cell. They are not present on the membrane. Now steroid hormone is one of the example which we can mention there. The hormones, there can be steroid hormones as well as there is the idothyronins also, idothyronins, but we will discuss the detail, that is the steroid hormone. Now a mechanism of this, how does this work? This mechanism of action of slow acting hormone, so adrenaline and insulin, they come under the category of quick acting, or steroid hormones, they come in the category of slow acting hormones. Why slow acting hormones? Because they have a lag period. अब आप बोलोगे मैम ये lag period कहाँ से आ गया, अभी अब तक तो कुछ नहीं डिस्कस किया हमने. सी टाइम, जैसे ही ये हार्मोन रिलीज हुआ, टाइम बिटवीन द रिलीज ऑफ दिस हार्मोन एंड इट्स इफेक्ट, जैसे ही इसने अपना फर्स्ट इफेक्ट टारगेट ऑर्गन पे शो किया और जिस मोमेंट पे ये रिलीज़ किया, उनके बिटवीन का टाइम, उनके बीच का टाइम को हम बोलेंगे लैग पीरियड. वन मोर टाइम, steroid hormones, they are the examples of slow acting hormones, and slow acting hormones की एक स्पेशलिटी, एक कैरेक्टरिस्टिक है कि दे हैव लैग पीरियड, बिकॉज दे आर स्लो एक्टिंग ना, तो उनके बीच में एक पीरियड है जो वर्क करता है. सो टाइम बिटवीन द रिलीज ऑफ हार्मोन्स, जब ये रिलीज हुए और उसके बाद जब फर्स्ट इफेक्ट दे शोड, दैट इज कॉल्ड लैग पीरियड. Now, see, their receptors, they mostly books they write nucleus, they mostly books they write cytoplasm. So हम दोनों को लेके चलेंगे. बेसिकली हमें ये पूरा पढ़ना है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म पढ़ा है और फाइनली हमें जाना न्यूक्लियस के अंदर ही है. सो दे हैव रिसेप्टर्स इन द साइटोप्लाज्म. इट मीन्स इनको तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करना पड़ेगा साइटोप्लाज्म तक पहुंचने के लिए. सो डेफिनेटली दे क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्वेश्चन आ गया हमारे माइंड में, कैसे? फर्स्ट थिंग, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो यहाँ लिपिड बैठी है,
So they are lipid soluble molecules. They are very efficiently able to cross the plasma membrane. And second thing, कोई भी चीज़ कब आसानी से क्रॉस कर पाती है, when it is smaller in size. So first thing, they are lipid soluble. Second, they are smaller in size, so they can cross the plasma membrane. So now let's talk about the example. Here I have taken the example of estrogen, and specifically you can mention the, as you know that beta estradiol is the example of estrogen. So here estrogen कौन रिलीज करता है, फॉलिक्यूलर सेल्स, राइट. और ये फॉलिक्यूलर सेल्स का टारगेट क्या है, यूटेराइन सेल्स. हमारे क्वेश्चंस रेडी हो रहे हैं, बहुत सारे प्रेपरेशन हम कर रहे हैं यहाँ पे. सो पे अटेंशन. एक्शन किस चीज़ का है, एस्ट्रोजन का. प्रोड्यूस कौन करता है, फॉलिक्यूलर सेल्स. कहाँ के लिए, यूटेराइन वॉल के लिए, राइट. सो दे वर्क और टारगेट इज द यूटेराइन सेल. सो हियर एज यू कैन सी, this is our large cell, that is we have the target organ we have made here. Now this is our uterine cell, which basically is the target cell for the our estrogen, right. Now the estrogen is released. Let me cover it with the another pen, right. So here what is happening, this is our estrogen release हुआ, फॉलिकुलर सेल्स ने रिलीज कर दिया. दिस एस्ट्रोजन हैज मूव्ड इनटू नाउ साइटोप्लाज्म, राइट. इट रीच्ड इनटू द साइटोप्लाज्म. यहाँ पे इसका रिसेप्टर प्रेजेंट है. दिस रिसेप्टर इज नोन एज एस्ट्रोफिलिन. दिस रिसेप्टर इज नोन एज एस्ट्रोफिलिन. ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट ये क्वेश्चन एम्स में आता है, राइट. एस्ट्रोफिलिन इज द रिसेप्टर हेयर. नाउ देयर इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, enzyme receptor complex, and this enzyme receptor complex, it is known as एस्ट्रोफिलिन 2. सबसे पहले आपका रिसेप्टर कौन सा था, एस्ट्रोफिलिन, और जब कॉम्प्लेक्स बन गया तो इसका नाम क्या हो गया, एस्ट्रोफिलिन 2. नाउ दिस कॉम्प्लेक्स एंटर इनटू न्यूक्लियस. ये हमने क्या बनाया है, हमारा न्यूक्लियस. अब आपको पता है कि अब दैट इज़ वाई इन बुक्स देयर इज़ अ रिटर्न दैट देयर इज़ द रिसेप्टर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, बट एक्चुअली जो इसके रिसेप्टर है वो साइटोप्लाज्म में ही होता है, बट कॉम्प्लेक्स बनते ही ये न्यूक्लियस के अंदर मूव कर जाता है. अब न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, डीएनए. तो ये कॉम्प्लेक्स जाके अटैच हो जाएगा हमारा डीएनए. डीएनए क्या करेगा, रेप्लिकेट पहले करेगा, उसके बाद करेगा ट्रांसक्रिप्शन. अब लिसन टू मी वेरी केयरफुली. डीएनए, राइट, डीएनए से पहले डीएनए बनता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन. व्हेन डीएनए टू एमआरएनए इज फॉर्म्ड, राइट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. व्हेन एमआरएनए टू प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड, that process is called translation. तो हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स है, it got attached to DNA. DNA will form the mRNA, right, and this process is transcription. mRNA कभी भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहता, it will move out from the nucleus into the cytoplasm. mRNA से बना हमारा प्रोटीन सिंथेसिस, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन. ये प्रोटीन्स दो तरह की बनाता है, वन इज द ओव एल्बुमिन, दैट इज द ओव एल्बुमिन, एंड सेकेंड इज ओवोविटिलिन. यहाँ पे लिख रही हूँ मैं फिर से, ओव एल्बुमिन एंड द सेकेंड वन इज ओवोविटिलिन, right. These two proteins are formed after translation, and now these proteins, they will promote the division of follicular cells, right, and follicular cells finally they will be divide. More and more follicular cells will be divide, and there will be the development of the ovary. So basically what is happening here, that this enzyme
this our estrogen, basically this estrogen is released, and this estrogen bind to the receptor which is estrophilin, and estrophilin when bind with the receptor it form a complex which is known as estrophilin 2. Then it enter into the nucleus, then there is the mRNA formed, and finally proteins are formed of albumin and ovovitilin, and there is the more and more division of follicular cells, right? Or you can say there will be the more and more there will be the tissue growth and differentiation, right? That is happening in the steroid hormone. But basically the main thing you need to understand here, that the time between hormone release, so now just look here, यहाँ पे ये जब रिलीज हुआ और फाइनली एक्ट कब हुआ, यहाँ पे जब डिवीजन ऑफ फॉलिकुलर सेल्स हुआ. सो दैट whole time between hormone release and protein synthesis, that is called lag period, and that is why it is a slow acting process. So this is so this is all about our lecture, our chapter, that is chemical control and coordination. Please, if you have any single doubt still in your mind regarding any single topic or point, then please mention in the comment section, or you can ask me, right? So better if you will ask, because that will help you to understand the topic thoroughly, right? So we will start and we will meet with the another lecture